So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, actually, I will be taking the Hindu analysis class. Some of you will be thinking, sir, Govind sir is taking the classes. So yes, just for one day, that is for today. Instead of Govind sir, I will be taking class because he's on leave for some reasons. So am I audible and visible? Everything is fine. अगर मेरी आवाज आ रही है, if everything is fine, everything is visible, please write in the comments. Yes, sir. तो अभी जो है the current burning topic, which is actually very much in the news, is I hope you are aware, US presidential elections, and result is also coming. I hope you all are aware of that. Am I audible, visible? Everything is fine. तो एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा, और आज भी फर्स्ट पेज पे इफ यू हैव रेड द हिंदू न्यूज़पेपर टुडे, on the first page it was talking about the US presidential election, right? Yes. So am I audible, visible, everything is fine? Okay, so let's begin. तो आज 6 November था, and that's actually Wednesday. So on the first page there was an article talking about American vote in close race as Harris Trump make final pitch. So basically they're actually talking about the US presidential election. और एक साइड में आर्टिकल थी judgment of Supreme Court, that also we will be discussing about issues related with private property and all. ठीक है, so the judgment related with that, this also we will discuss. तो पहले ये देखते हैं, and I have made a separate video. If you have not watched it, please go and watch it. आपको जाना है YouTube पे और ये सर्च करना है US presidential election 2024 career launcher law entrance. You will get this video. Go and watch it. US presidential election has been very much in the news, and there are chances that they will give questions from here. ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ और questions other than what I have already discussed in this class, I will be discussing in today's class some more extra questions which I have not discussed here. तो कुछ और questions भी मैं आज कराऊंगा जो इस क्लास में मैंने नहीं डिस्कस किया, ताकि most of the thing needs to be covered and all under this topic. अच्छा, quick questions. ये already मैंने कराया है, already have discussed it, but I'm just asking it so that I'm expecting that you should be knowing it. So the current election is actually Kamala Harris. So Kamala Harris versus Donald Trump. Now, please tell me who are actually the political parties to which both belong to. इन दोनों का नाम बताइए. The name of both the political parties, and the first tell me this, दोनों के political party का नाम बताइए, because I'm expecting कि आप fast answer करोगे इसमें without any delay, because I have discussed so many times, and I'm expecting you all to answer. And please tell me the symbol of the political party to which these two belong to also. Democrat and Republican. Yes, very good. Priyanshi, Tanvi, Pramod, Anshika, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन ठीक है, लेकिन आप सीक्वेंस से बताइए, कमला हैरिस के लिए कौन सा है, डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पार्टी से, ये बताइए. दोस्तों से डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन लेफ्ट से राइट, तो ठीक है, मतलब सीक्वेंस में. हाँ, सो कमला हैरिस इज एक्चुअली डेमोक्रेट, ठीक है, एंड दिस इज रिपब्लिकन, ये याद रखिएगा, ठीक है. एंड सिंबल क्या है, डेमोक्रेट का डंकी, यस प्रियंशी गोयल, एंड डंकी एलिफेंट, यस. नहीं, आप डंकी एलिफेंट लिख रहे हो, ठीक है, आप बता के बताओगे कौन सा किसका है. रिपब्लिकन का एलिफेंट, यस प्रियंशी गोयल. डंकी का डेमोक्रेट, एलिफेंट रिपब्लिकन, यस प्रमोद हेड, राइट. हाँ, सो दिस इज डंकी इज देयर फ्लैग और लोगो और व्हाटएवर यू कैन से द सिंबल, एंड रिपब्लिकन का एलिफेंट है, ठीक है. देखो यहाँ पे बना हुआ भी इस थंबनेल में, even on the thumbnail it is there, ठीक है. So this you should be knowing, we have already discussed it, so I'm expecting you all to know. एक चीज और बता दीजिए before moving on, that vice president किनका है, who is actually the vice presidential candidate of Kamala Harris and vice presidential candidate of Donald Trump. Please tell me that once. I'm not giving options because you all should be knowing it, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने already class कराया है. So I'm expecting you all to know. Kamala Harris vice presidential candidate बताइए कौन है, और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट.
Yes, good afternoon, Triti. Good afternoon. Those who are joining late, let me clarify. The Hindu analysis is generally taken by Govind sir, but for today only, I'll be taking the class. Okay. Tim Walls and JD Vance. Very good. Donald Trump, JD Vance, the Harris, Tim Walls, right, Triti? Tim Walls and JD Vance. Yes. Yes, Priyanshi Goel, Tanishka. You are right. ठीक है, तो ये इतना पता होना चाहिए. और जेडी वाइंस की जो वाइफ है, she is actually Indian origin, have some Indian origin link. I hope you are aware, है ना? She is actually from originally from the state of Andhra Pradesh. ठीक है, and that is why you should be knowing about it. Okay, so this is American vote in close race. कल ही election हुआ, मतलब 5th actually election 5th November को हुआ. तो 5th November मतलब कल रात में हम लोग समझ लो उनका election हो रहा होगा. That is what you should be doing. Hey, not from Kerala. JD Vance's wife is actually from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, originally from Andhra Pradesh, Krishna district. Okay. So that is what the first page of the Hindu was talking about. It millions of Americans went and voted for the new president and all. So people were saying कि neck and neck election hai. Means very close fight is there. So that is what is being discussed and all. तो इन लोग के बैलेट से ही वोट होता है, ईवीएम नहीं होता है, पता है ना? So they actually vote through that old style, old-fashioned ballot system and all. Okay. So that is what you should be knowing. So vice president, currently US vice president is Kamala Harris. She was fighting and all. So ये सब बात हो रही है. इसमें ये कि Miss Harris wrapped up her gap in Philadelphia, where America's founding fathers signed declaration and all. ठीक है. तो ये सभी बात करें, थोड़ा सा मैं बताता हूँ. I hope you are aware. US में एक जगह फिलाडेल्फिया, उसमें फाउंडिंग फादर्स ने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? प्लीज टेल मी द ईयर. डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लीज टेल मी द एग्जैक्ट डेट. ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर. डिक्लेरेशन, यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन फिलाडेल्फिया, एग्जैक्ट डेट बताइए. 4th of July. एग्जैक्ट डेट विद ईयर, मतलब एग्जैक्ट बताइए. So Anvika and Tanvi Jain, if I merge both their answers, then I have got the right option. 4th July 1776. Yes, Priyanshi Goel, very good. So this is the Declaration of Independence, है ना? Founding fathers George Washington, etc. and all. तो फिलाडेल्फिया में ये हुआ था, ठीक है. एंड 4th July 1776. यस, तनिष्का इज आल्सो राइट. इसलिए आपको पता होना चाहिए दिस डे. और इसीलिए दैट इज व्हाई दे डू सेलिब्रेट 4th July. लाइक वी सेलिब्रेट 15th अगस्त. जैसे हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं ना, समथिंग सिमिलर टू दैट दे सेलिब्रेट ऑन 4th July. ठीक है, सो यू शुड नो दिस. Okay, so these are the things. Kamala Harris got support from these actor, actress, singers and all. ठीक है, so this thing you should be knowing about. Now, सबसे important चीज जो इस बार इलेक्शन की थी, I hope if you are following the US presidential election, तो शायद आपको पता होगा कि अगर आपने फॉलो किया होगा, one of the main issue that was there in this election was abortion. Abortion rights जो है ना election issue बना था, पता है? And that is why I'm asking questions related with that. Actually this judgment was very much in the news last 2 years back. 2022 में काफी न्यूज में था. But the reason why I'm giving this question is because now they are asking, CLAT is asking questions slightly even one more than 1 year old and all. और ये अब तो इसलिए भी न्यूज में था कि abortion जो है ना वो न्यूज में था. The entire US presidential election, if you are following that campaign, you must have seen abortion rights पर पूरा election लड़ा गया है. So that is why. So basically in 1973 there is a judgment of Supreme Court which upheld the abortion rights, and that is a very prominent case. Yes, Priyanshi Goel, Anvika, Dhriti, Tanishka, Anshika, you are right. The right answer is B, Roe versus Wade case of 1973. So this is very, very prominent case where actually the Supreme Court of USA upheld the rights for abortion and all. So actually क्या है,
अगर आप देखोगे तो ये सब न्यूज आ रही थी, results of state level abortion ballot measures in the US and all, है ना, why abortion rights matter more in this US election. देखो इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल 4 days ago, आज ही मैं देख रहा था ये, and this was very much in the news that people are talking about abortion rights. अच्छा, who are supporting abortion rights and who are opposing among Democrats and Republican? So जो Democrats हैं, they are actually supporting, ठीक है, supporting abortion rights, मतलब कमला हैरिस एंड ऑल, ठीक है. और रिपब्लिकन्स जो होते हैं वो क्रिश्चियन वैल्यूज के लिए माने जाते हैं प्राइमरीली. सो रिपब्लिकन्स एक्चुअली slightly conservative, है ना. So Republicans are opposing this. Okay, this is what you should be knowing about. Now the next one is, now हुआ ये था उसके बाद जो 1973 में रो वर्सेस वेड केस था, which allowed or which upheld the constitutional validity of actually the rights of abortion, were overturned by the Supreme Court of USA 2 years back. और ये काफी न्यूज में था. So in which of the following case this was overturned? And since abortion is very much in the news regarding US elections, that is why I'm discussing it. I'm expecting at least 3, 4, 5 answers. Yes, Namo is saying D. Priyanshi Goel is saying D. Yes. What about others? Yes, Tanishka, you are also right. Dobbs versus Jackson Women's Health Organization case. Okay. So this is also about that. अगर आप देखोगे, landmark decision of US Supreme Court in which the held है ना, does not confer, है ना, right to abortion. This was overturned. I mean, it was considered as overturning of Roe versus Wade case. ये काफी famous हुआ था 2022 में, 2 साल पहले बहुत prominent था. It was very much in the news. ठीक है. So this is what you should be knowing. Now एक तो ये हो गया. Second thing है, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये केस दिखाया हूँ. इसमें एक ऑप्शन बी, इसका तो आंसर ऑप्शन बी था. Do you know what is option A? It is very famous. This is famous for judicial review. The concept of judicial review originated in USA under this judgment, Marbury versus Madison case, and now we are having also the concept of judicial review in India. So can you please tell me that what is judicial review? Anyone? The concept of judicial review we have taken from USA. Actually, this is the judgment, Marbury versus Madison case जहाँ से लिया गया. अच्छा, go and find out. It's a homework. What is judicial review? It's important, so you should be knowing it. मैं आपको homework दे रहा हूँ. Go and find out. And after the class is over, write it in the comment section. Class खत्म होने के बाद नीचे comments में लिखिएगा. What is judicial review? 9 schedules उसका कुछ लेना देना है. Yes, Tanvi Jain, you are right. It has some relation, but please explain that. Okay, so we are talking about abortion rights. Now, first thing, please tell me that which Indian law deals with abortion and all. So review enable that is not in line with the constitution. Yes, Namo, you are right to some extent, right? आपकी सही है. थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब you are right actually, but if you write it in more like MTP Act. MTP कहते हैं. Yes, Dhriti, Namo, Anvika, Nandini, Tanvi, you are right. Medical Termination of Pregnancy Act कहते हैं, MTP Act, which was amended 2 years back. तो पहले maximum termination की limit 20 weeks होती थी, but it was increased to 24 weeks. ठीक है. So these are the laws regarding it. And if it is more than 24 weeks, then you need a permission from a high court or a Supreme Court. ठीक है. Okay, so this you should be knowing about this MTP Act. Yes, great. Now the next is US Presidential Electoral College comprises of 270 members, 538, 543, 393.
Sir, please have a query above. क्या US court representative was removed last year. US court representative was removed. I need to find out नामो. हमको भी ध्यान नहीं आ रहा अभी currently. ठीक है. US Presidential Electoral College comprises of how many members and what is the majority that is required? Yes, Namo has answered me. Very good. And Priyanshi Goel is also right. Tanishka is right. So 538 members है और जीतने के लिए इतना चाहिए. You need 270 to win. So and I think currently जहाँ तक I could see is that Trump is actually much ahead of Kamala Harris and Donald Trump is winning. It's near 270 if I'm not wrong. So B is the right answer here. Anshika, Namo, Tanishka, you all are right. ठीक है 538 में 270 चाहिए. हाँ. Now let's move on. The current US presidential election is an election for dash president. यानी जो नए president बनेंगे, whosoever will be the new president, he or she will be considered as which number? 43rd, 47th, 49th, 50th. ये बहुत important होता है. ये मैंने देखा पूछते हुए कई सारे एग्जाम में. So that is why I would suggest to star mark this. Everyone should be answering it because I'm expecting you all to answer. Yes, Namo and Priyanshi Goel is saying 47, so B is the right answer. Yes. ठीक है. So B is the right answer. ठीक है. 47th president and 50th vice president. ये बताना चाहिए. 28 January 2025 को they will be taking oath. ठीक है. So ये आपको पता होना चाहिए. Now let's move on to the next topic. State has no right to acquire every private property, asserts Supreme Court. ठीक है. Actually क्या हुआ कि इसमें बहुत लंबा चौड़ा है because this cannot be taught here. But okay, I'm telling you in short. ठीक है. तो जो basic debate वो ये है. होता क्या है जो मेन डिबेट जितना भी आया है सुप्रीम कोर्ट. देखो आई होप यू आर जितने भी बड़े जजमेंट्स हैं, बिग जजमेंट्स लाइक केस ऑफ नंदा भारती केस, मेनी पॉपुलर जजमेंट्स आर बेस्ड ऑन दिस लैंड डिस्प्यूट or property, private property. So if you read all the big judgments of the Supreme Court, many of them have some connotation linked with this. जमीन का ही तो मेन विवाद होता है. So basically, actually, the concept बहुत बार इस पर टसल होता है. फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी में टसल होता है कि कौन सा जीतेगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको पता होगा 1978 से पहले देयर वाज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. और डीपीएस में लिखा है मिनिमाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. लिखा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे लिखा है 39 बी एंड सी के लिए है ना. द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट टू बेस्ट सबसर्व द कॉमन गुड एंड मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. अब ये ना कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है कि मिनिमाइजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का तो क्या रेट से पैसा छीन लो, गरीब को दे दो. डज इट मीन सो इनसे छीन के इनको दे दो? बिकॉज on the face of it appears कि this is also not correct ना. तो इसको बैलेंस करना है because rich has fundamental right or if not fundamental right at least constitutional right. I have my right to property. तो ये debate आता है and these are actually considered as socialist principle. तो basically socialism versus capitalism का debate इसको कहते हैं. ठीक है. इतना डिटेल नहीं जाना but just for rough purpose. Other capitalism support private property, socialism promote government property, that everything belongs to government and government can acquire any property and all. ठीक है. खैर, तो इसमें होता ये है कि इसमें different interpretations by different judges भी होता है. ओके. तो अब मैं को एक दो चीजें बता देता हूँ. एक amendment था 25th amendment which said 1971 के आसपास था, which said कि for implementation of 39B and 39C article 14 and 19 can be violated. It was upheld by the Supreme Court in Madrasa Act case. यानी इस दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 का वायलेशन, हालांकि ये दोनों फंडामेंटल राइट है और ये डीपीएसपी है. तो जनरली डीपीएसपी ऊपर होता है, फंडामेंटल राइट इज अबव डीपीएसपी जनरली. बट इन दिस केस ये था 25th अमेंडमेंट में कि नहीं 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 का वायलेशन किया सकता. 14 मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड 19 इज कॉम्प्रिहेंसिव, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोफेशन है ना, right to move freely throughout the state, right to have business, है ना, बहुत सारी चीजें 19 में. खैर, लेकिन इसमें एक बैलेंस होता है कि किस तरफ बैलेंस जाए. जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस वी कृष्णा अय्यर यहाँ पे डिस्कशन हुआ. सो जस्टिस वी कृष्णा अय्यर जो थे ना वो he actually favored the idea of socialism more.
इसका मतलब क्या है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होंगे, he will support this more strongly, ठीक है। लेकिन जो अभी जजमेंट आया वो ये बोला गया कि नहीं, इतना भी ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी का ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जो भी जमीन चाहे छीन ले और जो भी लैंड, सो बेसिकली थोड़ा सा उधर की तरफ गया, ठीक है, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। तो ये बैलेंस हमेशा कई बार इधर से उधर होता रहता है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट है जो कैपिटलिज्म के द्वारा सपोर्टेड है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट है ना, क्योंकि कम्युनिज्म या सोशलिज्म में होता है, लाइक यूएसएसआर में एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब पहले थोड़ा सा इधर था इसका इंटरप्रिटेशन, अब हल्का से इधर ले आया गया समथिंग, दैट इज हाउ, आई मीन दिस इज व्हाट द आइडिया इज। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट नहीं इंडिया में, देयर हैज टू बी देयर। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, अदरवाइज इफ आई गो इन डिटेल बहुत डिटेल चले जाएंगे। ना इश्यूज ये हुआ था इसमें, एक्चुअली हुआ क्या ना कि he there are at some incident where he a little bit criticized heavily, तो ये 37 31 सी ये है, इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। notwithstanding anything is sector and all for the implementation of 39 B and C, इसको भी रहने दो, ये वेग है थोड़ा, मैं आपको बता दूंगा। 31 एंड सी में ये लिखा था, अभी करंटली जो प्रोसीजर है वो ये कि 39 बी और 39 सी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 14 and 19 can be violated, this is the idea. It means for implementation of DPSP we can violate these two fundamental rights, ठीक है। तो ये this is even the current situation also, so I'm not going currently in detail because that will be too long। तो उसमें था कि जो जस्टिस वी कृष्णा अय्यर थे उन्होंने पहले एक इंटरप्रिटेशन किया था which was favorable towards socialism, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कमजोर किया था, वीकन किया था। लेकिन जो ये अभी जजमेंट आया उसमें जो है ना उसको अपोज किया जजेस ने, so 9 में आई थिंक 8:1 है if I'm not wrong, ठीक है। 8 judges ने supported the idea, strongly supported the idea of property, private property के फेवर में, और इसमें से एक CGI भी है, but the problem was that CGI actually wrote something which was harsh criticism of a former judge of a Supreme Court। तो उसमें 2 judges ने एतराज जताया, so the 2 judges of Supreme Court were not happy the way CGI wrote the judgment, ठीक है। तो one judge was Justice सुधांशु डोलिया जो कि dissenting judge भी है, ठीक है, and another one who supported the idea, Justice Nagaratna, but she also said कि yes we can pass an order but we cannot decry the previous judges, and she supported the idea partially कि हाँ private property का concept को we need to strengthen it, but we should not heavily criticize a previous judge because we are Krishna Iyer जो है ना उनका बहुत बड़ा नाम है, one of, if you read the history of the Supreme Court of India कुछ judges का बहुत famous names है, so Justice V Krishna Iyer is considered as one of the famous one। इनके कुछ प्रिंसिपल्स है जो अभी भी इवन टुडे इट इज यूज्ड, जैसे आपने सुना होगा बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, सुना ये? सिमिलरली द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सुना है? ये कई बार पूछा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वाज गिवन बाय होम, सो जस्टिस वी कृष्णा अय्यर, ठीक है। Justice P.N. Bhagwati was the CJI at that time, but the concept of judicial activism, आप पढ़िएगा थोड़ा सा जाके इसके बारे में, just judicial activism by Justice V. Krishna Iyer, कभी कभी sometimes they ask, ठीक है, हाँ ठीक है, so just remember it। now एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, मुल्स मतलब सोचना, थिंक करना है ना, treating Wikipedia as content publisher। Actually हुआ क्या कि एक केस था ANI से related, there was a case actually recently, it was very much in the news, है ना, in the first Wikipedia takes down article globally after Delhi High Court order। अब हुआ क्या था कि in one of the pages of Wikipedia talking about ANI is a news agency, आपने नाम सुना होगा, it's a news agency like we have PTI, ANI, INS and Reuters and all। ANI is an Indian news agency, उसके बारे में विकिपीडिया पे there was something written which they did not like, they filed a petition। तो उसमें लिखा हुआ था कि ANI has been accused of spreading pro government propaganda, anti opposition disinformation etc, ये वाली लाइन लिखी हुई थी, and using a vast network of fake news etc to push disinformation। This line was mentioned in the Wikipedia, ये वाली, and this was not liked by ANI and they filed a petition and all। उसके बाद जो है वो सर एक्शंस वगैरह मतलब विकिपीडिया पे एक तरह से लिया गया, so दिल्ली हाई कोर्ट वाज नॉट हैप्पी एंड ऑल। खैर, तो इसमें है ये कि अब गवर्नमेंट ने सोचा है कि इनको भी कंटेंट पब्लिशर में कैटेगराइज किया जाए, सो नाउ दे विल कम अंडर आईटी एक्ट। तो उस पर क्या होगा ना कि लीगल एक्शन हो जाएगा इफ देयर इज समथिंग
wrong or if there is something which should not be there अगर और है तो ठीक है. तो खैर we are not going in that detail, but you should know कि content publisher अगर का concept जो वो IT Act या IT rules में, this rule actually flows from IT Act 2000. Under this IT rules were made, information technology rules were made in 2021. तो अगर आपको कंटेंट पब्लिशर क्लासिफाई कर दिया गया तो आपके बहुत सारे रूल्स के अंदर में आ जाएंगे. यू हैव टू फॉलो ऑल दीस, अदरवाइज लीगल एक्शंस कैन बी टेकन. खैर ठीक है. देन फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वैलिडिटी ऑफ यूपी मदरसा एक्ट आल्सो कंफर्म स्टेट अथॉरिटी पावर्स. तो इसमें ये था, मैं सिंपल बताता हूं. यूपी मदरसा एक्ट 2004 वाज क्वाश्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट. Okay, then so Supreme Court reversed the order. So it upheld it, मतलब it said it is yes, okay, fine, except one provision. एक provision को छोड़ के बाकी सबको uphold किया है. And the one provision is, and declared that provision of 2004 appertaining to higher education, Kamil and Fazil were in direct conflict with provision of UGC. तो actually क्या होता है, जैसे मदरसा में भी जो होता है ना, वो बोर्ड पेपर होता है, मतलब जैसे क्लास 9th, क्लास 10th का बोर्ड होता है, 11th होता है, 12th होता है, फिर बीए होता है, एमए होता है, पीएचडी होता है, इस तरह का भी होता है. ठीक है, बुस्तानी या फुरखानी इस तरह कहते हैं. ओके, मतलब कि 10th का के भी इक्विवेलेंट कुछ डिग्री होती है मदरसा में, 12th में के इक्विवेलेंट होती है, बीए के इक्विवेलेंट, एमए के इक्विवेलेंट. उसमें एक चीज जो था कि जो ये फाइन है, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट बीए और एमए के जो है, बीए को कामिल कहते हैं. ठीक है, तो बीए को कामिल लिख देते हैं, बीए इज कामिल एंड एमए इज फाजिल कहते हैं. तो अगर कोई कह रहा है कि पास आउट, आई एम फाजिल, इट मींस ही इज एमए, इक्विवेलेंट टू एमए डिग्री. तो बीए एमए की डिग्री वाले जो इश्यूज है उसको बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज वायलेशन ऑफ यूजीसी नॉर्म्स. सेकंड थिंग इज वो एंट्री 66 में यूनियन लिस्ट में आता है बीए एमए वाला डिग्री. सो इंस्टेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉ, इट इज एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. उसके अलावा रेस्ट एक्चुअली द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट. बस इतना पता होना चाहिए. ठीक है. Now, since we are talking about it, this is a line which is mentioned in which article of the Constitution? बताइए तो. Rights of minorities to establish and administer educational institution of their own choice. तो ये इस तरह का आर्टिकल कहाँ मेंशन है? ये मैंने देखा जामिया में क्वेश्चन आया हुआ है. एक बार रिवाइज करो. एनीवन? क्योंकि अभी न्यूज में था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सो यू शुड बी नोइंग 29 एंड 30. इट्स एक्चुअली मेंशन इन 30. ठीक है, मैं बता देता हूँ. राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल 30 टॉकिंग अबाउट इट. तो आप कह सकते हैं जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, देन वी हैव आई थिंक खालसा कॉलेज समथिंग इज देयर, देन वी हैव सेंट स्टीफेंस. ठीक है, सो दीस ऑल आर एक्चुअली हियर under this, but 29 नहीं होगा. some people are saying 29 नहीं, no it's not 29, because मैं पूछ रहा हूँ कि administer educational institution, तो article 30 में explicitly mention है. okay, now some people are saying sir 29 protection of interest of minorities, यहाँ भी तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है any section or protection of interest. ये दोनों contradictory नहीं लग रहा है? any section मतलब कोई भी ना, any section of citizen has the right to protect their language culture, तो any section हो गया. तो फिर माइनॉरिटीज की हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि यस दिस इज राइट, मतलब नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज बट फॉर एवरीवन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. नाउ व्हेन इट देन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटोरियल्स. ये पता होना चाहिए वाला 30 वाला ना पूछते हैं जामिया अलीगढ़ से कैंपस में. आर्टिकल 30 राइजिंग स्टेम रिसर्च. स्टेम रिसर्च मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथ्स, सॉरी हाँ. So STEM रिसर्च कहते हैं. STEM रिसर्च पर इन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा जिसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. Don't do and research and all. Just have an idea. हाँ, ये वाला आइडिया था साइड में, solemn promise. Actually ये था कि I hope you are aware that on 5th August 2019 Jammu and Kashmir में Article 370 was abolished and Jammu and Kashmir was made union territory. But now जब petition वगैरह गया था, when it was challenged, the government agreed. Government ने मतलब एक तरह से वादा किया कि we will actually reverse it back to the state. So we will make Jammu and Kashmir a state. That is what, in fact, the promise is. Supreme Court ne bhi kaha you should make it back a state and all. Okay. So that is what is being talked about. That the call by the Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Mr. Manoj Sinha for restoration of statehood. तो उन्होंने कहा कि हाँ statehood को restore किया जाएगा and all. That is what is being talked about here. ठीक है. Because recently elections happened and a new chief minister
led by National Conference. Who is the new chief minister? Please tell me. Mr. Umar Abdullah. Oh, select Umar Abdullah is the new CM. Okay, that is what you should be knowing about. Yes, Veer Sharma, Namo Priyanshi Kut. From Jammu and Kashmir National Conference. ये इतना पता होना चाहिए. ठीक, आधार बायोमेट्रिक डेटा एक्सेस, इसमें इतना डिटेल अभी नहीं जाना, खास के एग्जाम से इतना पहले नो नीड टू गो इन डिटेल. बस ये पता होना चाहिए आधार कंट्रोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का थी, तो UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो उसी बात आपको पता होना चाहिए. UIDAI एक्ट है, तो इट इज आधार एक्ट जिसको कहते हैं जनरली. सो इट इज एक्चुअली अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, अभी एग्जाम से पहले आपको कैसे पढ़ना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. एक ये हुआ था कि जापान में इलेक्शन हुआ था रिसेंटली, एंड वी हैव सीन अ न्यू चीफ प्राइम मिनिस्टर. हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर? प्लीज टेल मी. एंड हु इज द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर? न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर नेम. देखो 27 अक्टूबर को हुआ था इलेक्शंस. ठीक है, तो डाइट जो है उनकी पार्लियामेंट का नाम है. ठीक है, एंड उनकी जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ इलेक्शन हुआ. लोअर हाउस लाइक वेरी सिमिलर टू लोकसभा इन इंडिया, ऐसे समझ लो. तो शिगेरू इशिबा इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, और इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे फूमियो किशिदा. एक्स पीएम लिख लो ये, और इनको लिख दो न्यू पीएम. ठीक है, सो दिस यू शुड. न्यू इज इशिबा, ओल्ड इज फूमियो. यस, नमो, वेरी गुड. प्रियंशी, तानवी, वीर, अद्री, यू ऑल राइट. ठीक है, खैर, तो ये शिगेरू इशिबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, पार्टी का नाम भी हो सकता है, पूछ रहे हैं. सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट. बस ज्यादा नहीं जानना, वोटिंग वोटिंग इतना नहीं जानना, बट ये पता होना चाहिए पार्लियामेंट का नाम क्या है. डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान. कैपिटल तो पता ही होगा, टोक्यो. करेंसीज येन, ये सब जानती होगी. आई होप दैट यू शुड बी नोइंग दीस थिंग्स. देन इंडिया कनाडा रिलेशंस भी आप पढ़ ही रहोगे होपफुली. इंडिया एंड कनाडा रिलेशंस, इससे पूछ सकते हैं कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन है. एंड इंडिया कनाडा हैज टोल्ड अस टू लीव द one high commissioner. Who was the high commissioner who was asked to leave? Indian high commissioner to Canada. उनका नाम बताइए. ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, so these are the things you should be knowing about India Canada relations. बताइए, name of high commissioner or ambassador who was asked to leave. विनय मोहन क्वार्टर नहीं, तो फॉरेन सेक्रेटरी रहते ना, फॉरेन. इस नेम इज आई थिंक संजय कुमार वर्मा करके. आप एक बार नाम देख लीजिएगा. ठीक है, हाँ, ये स्थानवी जन राइट. हाँ, टू जजेस डिसएग्री विद सीजीआई's रिमार्क ऑन आईएएस डॉक्ट्रिन. ठीक है, तो ये न्यूज़ था काफी, है ना. तो इसमें ये था कि उन लोगों को मतलब ये था कि हेवली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था प्रीवियस जजेस को, है ना. हाँ, यस अनविका, यू आर राइट. संजय कुमार वर्मा करके उनका नाम है. यस, ठीक है. बेसिक स्ट्रक्चर भी अब ऑलरेडी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको पता होगा फुली, सो आई एम नॉट रिपीटिंग केशवानंदा भारती केस. जिनको नहीं पता, प्लीज गो एंड रीड अबाउट केशवानंदा भारती केस, 24 अप्रैल 1973. इट्स अ वेरी फेमस जजमेंट, 13 जज ऑर्डर. ठीक है, सो दिस यू शुड बी नोइंग. ठीक है, ये पता होना चाहिए ना केशवानंदा भारती केस. होपफुली you should be knowing about Keshavananda Bharati case, which gave the concept of basic structure, which means the basic structure of the constitution cannot be destroyed by constitutional amendment and all. ठीक है, तो ये काफी सारे अक्सर न्यूज़पेपर में रहता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड ऑल. ये आपको पता होना चाहिए. The next is India is planning to host Dash Olympic Games. Can you quickly revise the concept Madrasa judgment that is not upheld once? अच्छा प्रियंशी को I will tell you. पहले इसका आंसर बता दीजिए. इंडिया इज प्लानिंग टू होस्ट डैश ओलंपिक गेम्स. व्हिच वन? इंडिया ने रिक्वेस्ट रेज किया है, देखो क्या होता है. वीर शर्मा इज सेइंग 2036, नमो इज सेइंग 2036, प्रियांशी इज सेइंग 2036. हाँ, यस, द राइट आंसर इज बी. बट व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ 2-3 ही आंसर लोग आंसर कर रहे हैं. वो स्पोर्ट्स पेज में था, लेट इंडिया सेंड्स लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट 2036 गेम्स. तो यानी इंडिया ने जो है रिक्वेस्ट भेजा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वालों को कि वी आर इंटरेस्टेड इन होस्टिंग एंड ऑल.
ठीक है। यस, केस सदानंद भारती में हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस थे, 13 मैक्सिमम। किसी ने ये पूछा था सर ये बता दीजिए। देखो होता क्या है, जैसे नॉर्मल स्कूल सिस्टम होता है वैसे मदरसा में भी स्कूल्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, फिर बीए, एमए, ठीक है। तो बीए की इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है उसको कामिल कहते हैं, और एमए की इक्विवेलेंट फाजिल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों का जो गाइडलाइंस है, जो मदरसा एक्ट, यूपी मदरसा एक्ट में बनाया गया है, दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ यूजीसी गाइडलाइंस, बिकॉज यूजीसी जो होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी कुछ गाइडलाइंस होती है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए जो बीए एमए की डिग्री देती है। तो ये कहा है कि इट इज वायलेशन। सेकंड थिंग इज जनरली जो ये होता है ना बीए एमए वगैरह की डिग्री के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाई जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पावर होता है वो सब लॉस बनाने का, रिगार्डिंग ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स एंड ऑल। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंट्री 666 आप पढ़ोगे यूनियन लिस्ट का, तो उसमें मेंशन्ड है and it is a union list, so the state cannot make laws, because ये जो 2004 का लॉ है यूपी मदरसा लॉ, this was made by the state legislature, okay, except at the kamil and fazil levels was consistent with the positive obligation of the state to that not यानी कामिल और फाजिल लेवल यानी बीए और एमए लेवल को छोड़ के बाकी जितने मदरसा के लॉज हैं और बाकी छोटे जूनियर लेवल्स के लिए इट इज ओके फाइन। ये बताऊंगा, ठीक है, इज इट क्लियर? किसी ने बोला रिपीट करने के लिए, सो आई डिसाइडेड टू रिपीट। प्रियांशी ने कहा था, इज इट ओके प्रियांशी? होपफुली ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल है? आई विल बी मीटिंग यू टुडे आल्सो 6 PM, जो कि मेरी ओरिजिनल क्लास है, ठीक है। सो विद रिवीजन ऑफ कोर्स, प्लीज डू ज्वाइन मी 6 PM with the revision series. We are doing revision and we have already done 9 parts. This is the 10th part that we are going to discuss. उसमें ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मैं बता दूंगा कि पहले प्रीवियस पार्ट्स देखना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल, गो एंड वॉच इट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।